Okay. So next heading is ecological succession. Next heading is ecological succession. Okay. Now, ecological succession होता क्या है, पहले इसको समझिए. कहीं पे भी अगर आप जाएं तो what you will observe, community structure is not static. मतलब जो भी वहां पे प्लांट एनिमल वगैरह है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रहेंगे. It keeps on changing, and these changes are parallel to the change in surrounding environment. ठीक है, जैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे इनका कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी चेंज होगा. ये जो ऑर्डरली सीक्वेंशियल, ठीक है, डायरेक्शनल प्रेडिक्टेबल चेंज होता है which are parallel to the change in surrounding physical environment is known as ecological succession, and that finally leads to a community which is more or less at the state of equilibrium with the surrounding, and that community is known as climax community. जो कम्युनिटी इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं पायनियर कम्युनिटी. ठीक है, जो पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में आता है उसको हम लोग कहते हैं सीरियल स्टेज. ठीक है, और ये सारे कम्युनिटी जो पायनियर हो गया, सीरियल स्टेज हो गया और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये सारे कम्युनिटी है, इनको सबको एक साथ हम लोग कहते हैं शेयर्स. दे आर रेफर्ड एज शेयर. प्रणम, structure of community is not static. Structure of community is not static. It keeps on changing. It keeps on changing. And here changes are parallel to change in surrounding physical environment. Here changes are parallel to change in surrounding physical environment. This orderly, sequential, predictable change, this orderly, sequential, directional, predictable change, where changes are parallel to change in surrounding physical environment. Change in surrounding physical environment is known as ecological succession. Next point लिखिए. Community which starts the process of succession. Is known as pioneer community.
Intermediate community is known as serial stage. Intermediate community is known as serial stage, and community or actually and the final community which is more or less at the state of equilibrium, more or less at the state of equilibrium with surrounding is known as climax community, ठीक? And all these communities together, referred as shares, SERE ब्रैकेट में S, referred as shares. Okay. अब देखो जहां पे भी ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, सीरियल SERAL, सीरियल नहीं सीरियल, ठीक है, जहां पे भी ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो सम स्पीसीज विल कॉलोनाइज दैट एरिया, ठीक है, that means their number will increase and number of some of the species will decrease or it will be completely removed from that particular place, ठीक है, जरा डाउन. During the process of ecological succession, population of some of the species will increase. And that of other will decrease. Or they can be completely removed from that particular area. ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया सबको? क्या उदय, क्या पूछो? डिक्रीज और कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट लिखिए. हो गया ना. जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा then there will be increase in number of species and also in the number of organisms. That means species diversity will increase, okay, along with the number of organisms. During the process of ecological succession, there will be increase in number of species. During the process of ecological succession, there will be increase in number of species, that is
species diversity will increase. Species diversity will increase, and also there is increase in number of organism. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए. There is increase in amount of biomass. नेक्स्ट पढ़ लीजिए. There is increase in amount of biomass at the level of community. There is increase in amount of biomass at the level of community. लिख लिया. ना अब देखो, सक्सेशन को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, अभी क्या है, इससे पहले एक क्वेश्चन लिखिए. ये क्वेश्चन ना एएमयू में आया हुआ है और एक बार बीएचयू में आया हुआ है, एपीएमटी में नहीं आया है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है कभी. राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए. What would be the variation in P by R ratio? P by R ratio का मतलब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. P by R ratio during the process of succession from pioneer to climax community. अब इसको समझो, इसको देखो, कहीं पे भी सक्सेशन हो रहा है तो इनिशियली बायोमास का अमाउंट कम है, तो बायोमास बिल्ड करना है. तो इनिशियल फेज में क्या होगा, पायनियर कम्युनिटी और सीरियस स्टेज में P by R रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर P by R रेशियो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो बायोमास बिल्ड नहीं होगा. ठीक है, और हमने क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए क्या कहा कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज मोर और लेस एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. दैट मींस P by R रेशियो इज मोर और लेस इक्वल टू 1. समझ में आया? ये समझ में आया सबको ना? देखो, मैंने कहा आपसे ये क्वेश्चन पूछा मैंने, जिनको नहीं समझ में आया समझ ले. मैंने पहले ये बोला कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेशियो में क्या वेरिएशन होगा जब क्लाइमेक्स के प्रोसेस को आप स्टडी करेंगे. तो इनिशियली आपका पर्पस है बायोमास को बिल्ड करना. वहां पे बायोमास तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा. तो इनिशियली जो P by R रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, तभी तो बायोमास वहां स्टोर हो पाएगा. और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए हमने कहा कि इट इज मोर और लेस एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वहां पे जो P by R रेशियो है इट विल बी मोर और लेस इक्वल टू 1, एक के बराबर होगा. क्लियर है? राइट ऑन. इनिशियली P by R रेशियो
will be greater than 1 as there is requirement for building up biomass, as there is requirement for building up biomass, and at climax at climax P by R ratio is more or less equal to 1. P by R ratio is more or less equal to 1 as climax community as climax community is more or less at the state of equilibrium, more or less at the state of equilibrium with surrounding. क्लियर है पॉइंट सबको? क्लियर है सबको ये? चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सक्सेशन. ठीक है, हम सक्सेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ ए कम्युनिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी कम्युनिटी के रिमूवल के लिए उस पर्टिकुलर एरिया से. तो एक होता है हमारा ऑटोजेनिक सक्सेशन. ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी वहां पे है, वही खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने रिमूवल के लिए. ठीक है, जैसे मान लो ऐसे समझो जैसे मैं हूं, मैं एक कम्युनिटी हूं, मैं बॉटनी पढ़ाता हूं, मैंने इतना खराब बॉटनी पढ़ाया कि मुझे हटा दिया गया, तो कोई और तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो सच टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज ऑटोजेनिक सक्सेशन. ठीक है ना. दूसरा आता है हमारा एलोजेनिक सक्सेशन. ठीक है, एलोजेनिक सक्सेशन क्या है कि कोई और कम्युनिटी आके वहां पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को रिमूव कर देगा. जैसे मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, कोई और टीचर आया मुझसे अच्छा बॉटनी पढ़ा गया, ठीक है, तो आप तो प्रेफर करोगे उससे पढ़ना क्योंकि ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है. ठीक है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरे से कोई बेटर था, उसने मुझे रिप्लेस कर दिया. दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन. समझ में आए ये दोनों पॉइंट आप लोगों को? क्लियर है दोनों पॉइंट? चलिए राइट ऑन. Autogenic succession is divided into, right on, succession is divided into two different types on the basis of, succession is divided into two different types on the basis of what factor is responsible for, what factor is responsible for removal of a community, what factor is responsible for removal of a community from a particular area, from a particular area. First read on autogenic succession. First read on autogenic succession. When a community is itself
when a community is itself responsible for when a community is itself responsible for its removal from a particular area, then such type of succession such type of succession is known as autogenic succession, is known as autogenic succession. नेक्स्ट लिखिए एलोजेनिक सक्सेशन. When an existing community when an existing community is removed by when an existing community is removed by some other community then it is known as allogenic allogenic succession. Then it is known as allogenic succession. ठीक है. नेक्स्ट हम सक्सेशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज टेकिंग प्लेस. इसका हैबिटेट क्या जहां पे वो हो रहा है. एक होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है. तो डाउन succession is divided into two different types. Succession is divided into two different types on the basis of place where it is taking place. On the basis of place where it is taking place. ठीक है. फर्स्ट राइट ऑन प्राइमरी सक्सेशन. फर्स्ट राइट ऑन प्राइमरी सक्सेशन. ठीक है. तो समझ लो इसको. प्राइमरी सक्सेशन होता क्या है. प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन जो उस एरिया में हो रहा है जहां पे कभी भी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. ठीक है. कभी भी कोई कम्युनिटी जैसे कि बेयर रॉक कोई चट्टान पड़ा हुआ है उस पे हो रहा है कम्युनिटी, या न्यूली कूल्ड लावा मैंने वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा कूल हो गया, एक सबस्ट्रेटम बन गया, या न्यूली फॉर्म पॉन्ड और रिजर्वायर कोई नया तालाब किसी ने बनाया या कोई डैम बना वहां पे. ठीक है. तो ये सब एरिया में पहले से कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे अगर कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन. ठीक है. अब देखो प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो भाई सॉइल तो चाहिए और यहाँ पे तो कोई सॉइल है नहीं. रॉक पे क्या सॉइल है, कुछ नहीं है. मतलब सबसे पहला काम होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ठीक है. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. So climax will reach in thousands of years. Okay, that means primary succession is a slow process because formation of soil takes place in 100 to thousands of years. As a result, climax reaches in 100 to thousands years. ठीक है, ये हो गया. दूसरा हमने कहा सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है. ऐसे एरिया में सक्सेशन जहां पे पहले तो कम्युनिटी था लेकिन किसी कारण से वो कम्युनिटी वहां से हट गया. ठीक है. अब फिर से वहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है.
ठीक है। तो अगर फिर से कम्युनिटी डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है तो ये प्रोसेस जो है ये फास्ट होगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ सॉइल इज देयर, सॉइल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे कैसा है वो भी डिसाइड करेगा, प्लस वहां पे कैसा प्रोपग्यूल मतलब सीड कैसा पड़ा है वो भी सेकेंड डिसीजन है। जैसे कि आप ऐसे समझो कोई फॉरेस्ट है, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर, तो पहले कम्युनिटी था अब नहीं है। फ्रेशली फ्लडेड एरिया, कोई एरिया बाढ़ आया वहां पे सबमर्ज कर गया। अबंडेंट फार्मलैंड, आप खेती कर रहे थे कहीं पे, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया कि अब खेती इस पे नहीं करना, तो ऑलरेडी वहां पे सॉइल तो है, कुछ कम्युनिटी था, अब उसको आपने हटा दिया, लेकिन अब फिर से वहां पे नया कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए, थर्ड एंड फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन। फर्स्ट हेड ऑन प्राइमरी सक्सेशन, it takes place it takes place in area which is not earlier occupied by which is not earlier occupied by any other community, which is not earlier occupied by any other community, like like bare rock, newly cooled lava, next freshly formed pond or reservoir, freshly formed pond or reservoir। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो प्रोसेस, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो प्रोसेस it takes 100 to several thousand years to reach climax, it takes 100 to 1000 years to reach climax as formation of soil, as formation of soil takes 100 to 1000 years, as formation of soil takes 100 to 1000 years। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी सक्सेशन, secondary succession, it takes place in area it takes place in area which was earlier or which is earlier occupied by which is earlier occupied by some community, which is earlier occupied by some community, but that community but that community
no longer, that community no longer exists there. But that community no longer exists there. ठीक है, लिख लिया? No longer exist there. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एग्जाम्पल लिखिए. abandoned farmland, abandoned farmland. सेकंड लिखिए. forest destroyed by forest fire, forest destroyed by forest fire. नेक्स्ट लिखिए. freshly flooded area, freshly flooded area, etc. freshly flooded area, etc. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. secondary succession is a fast process. Secondary succession is a fast process as some amount of soil is already present there, as some amount of soil is already present there, and it also depends upon मैंने कहा secondary succession is a fast process as some amount of soil is already present there, and it also depends upon amount of water present in soil, type of propagule present in soil, ठीक है. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट. अब मान लो कहीं पे सक्सेशन हो रहा है, ठीक है. जैसे मान लो कहीं पे सक्सेशन हो रहा था, ए से बी बना, बी से सी कम्युनिटी आया, सी से डी आया, ठीक है. ऐसे कम्युनिटी चल रहा था, हमें पता है डायरेक्शनल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है. सडनली क्या हुआ? देयर इज डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, एंड दैट डिस्टर्बेंस कैन बी मैन मेड और नेचुरल. हमारे कारण हुआ या किसी नेचर का कुछ ऐसा रीजन हुआ उसके कारण हुआ. तो अगर डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, दैट विल क्रिएट न्यू कंडीशन, ठीक है. अगर नया कंडीशन होगा, देन व्हाट विल हैपन? सक्सेशन विल रिवर्ट टू अर्लियर स्टेज, वो पीछे आ जाएगा सक्सेशन,
and then the direction of succession will change, and that will depend upon the new condition created. मैं हिंदी में इसको समझाता हूं. मैंने ये कहा कि मान लो सक्सेशन हो रहा है और किसी कारण से वहां पर डिस्टरबेंस हो गया, चाहे वो इंसान के कारण, चाहे नेचर के कारण. तो अब क्या होगा, सक्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सक्सेशन पीछे आएगा, रिवर्ट बैक होगा. एंड उसके बाद क्या होगा, फर्दर डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन विल डिपेंड अपॉन न्यू कंडीशन क्रिएटेड. जो नया कंडीशन बना वो डिसाइड करेगा कि सक्सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा. समझ में आई ये पॉइंट सबको? चलिए रन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, during the process of succession, if there is any disturbance, if there is any disturbance which can be man-made or natural, which can be man-made or natural, as a result succession will revert to earlier stage. As a result succession will revert, revert to earlier stage, and the further direction of succession will depend upon condition created. Further direction of succession will depend upon condition created. समझ में आया इस पॉइंट का मतलब? क्लियर है ना सबको ये ना? अभी तक जो हम लोग सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग सक्सेशन में प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भैया प्लांट का कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. लेकिन अगर मान लो प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो साथ के साथ वहां पे जो एनिमल प्रेजेंट है वो भी चेंज होंगे. ठीक है? और एनिमल के साथ साथ वहां पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनका भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होगा. दैट मींस along with the change in plant community structure during the process of succession, there is also change in type of animal present and type of microbe present in that particular area. तो उनका भी सक्सेशन साथ के साथ हो रहा है. समझ में आया ये पॉइंट? Radon, during the process of ecological succession, during the process of ecological succession, along with the change in plant community structure, there is also change in type of animal present and type of microbe present. There is also change in type of animal present and type of microbes present. And this is referred as, animal and microbe present. So succession of plant and animal also takes place. Okay? Succession of plant and animal also takes place. Okay? Now, next heading लिखिए, succession of plants. Succession of plants. Next heading is
succession of plants. ठीक, फर्स्ट में लिखिए, when ecological succession takes place in water body, when ecological succession takes place in water body, it is known as hydrarch succession. It is known as hydrarch succession. And when it takes place on rock, when it takes place on rock, it is known as Xerox succession. When it takes place on rock, it is known as Xerox succession. ठीक है, लिख लिया ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in hydrarch succession, pioneer community is phytoplankton, तो अब सबसे पहले क्या होगा, देखो जब हाइड्रार्च सक्सेशन हो रहा है तो सबसे पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन, इसके बाद क्या होगा, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, इसके बाद क्या आएगा, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, इसके बाद क्या आएगा, रीड स्वैम्प स्टेज, इसके बाद क्या आएगा, मार्स मेडो स्टेज, इसके बाद क्या आएगा, स्क्रब वेजिटेशन, और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज फॉरेस्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ऐसे चलेगा सर, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद रीड स्वैम्प, उसके बाद मार्स मेडो MARSHMEADOW स्टेज, उसके बाद स्क्रब वेजिटेशन एंड फाइनली फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन जो है हमारा वो पायनियर है। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है हमारा क्लाइमेक्स है, और इनके बीच में जितना भी ये है, ये हमारा क्या है, सीरल स्टेज। स्क्रब वेजिटेशन, SCRUB, स्क्रब वेजिटेशन। ठीक, देख लिया। ये अलग अलग प्लांट के स्टेज, इनके एग्जाम्पल हमें नहीं जानना, जैसे कि सबमर्ज प्लांट स्टेज का सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, मार्स मेडो स्टेज, स्क्रब वेजिटेशन, ये सारे बीच वाले स्टेज है जो पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच में आते हैं। हर एक के एग्जाम्पल है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। जब रिक्वायरमेंट होगा तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन Xerox सक्सेशन, इन Xerox सक्सेशन pioneer communities always crustose lichen. Pioneer communities always crustose lichen. Like Graphis, Lecanora, Rhizocarpon, Graphis, Lecanora, Rhizocarpon. क्यों होते हैं बताइए, मैं आपको ये बता चुका हूं पहले क्यों होते हैं ये। याद है कुछ? हाँ, मैडम, they have ability to release carbonic acid. They have ability to release carbonic acid, which is responsible for weathering of a rock. Carbonic acid, which is responsible for weathering of rock, thus helps in formation of soil. Thus helps in formation of soil. ठीक है, अब ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि irrespective of whether succession is taking place in soil or water or on rock, कहीं पे भी हो सक्सेशन, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जो फाइनल कम्युनिटी है, दैट इज ऑलवेज म्यूजिक। मतलब लैंड कंडीशन, ना पानी ज्यादा ना पानी कम, जो धरती हम लोग देखते हैं वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट डाउन, irrespective of whether succession takes place in water or on soil or on rock or on rock, climax communities always music. Climax community is always music, MESIC. ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। म्यूजिक मीन्स लैंड कंडीशन। मोहित, टेक्स प्लेस के बाद इन क्या टेक्स प्लेस के बाद, मुझे थोड़ा याद रहता है। म्यूजिक का मतलब होता है कि लैंड कंडीशन, जो धरती में जो पेड़ पौधे में दिखते हैं, कहीं पे भी सक्सेशन हो, अल्टीमेटली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगा वो हमारा फॉरेस्ट आएगा, म्यूजिक कंडीशन आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? हमें पता है living organisms requires different inorganic nutrient for their growth, reproduction, and to perform various metabolic or essential functions. तो क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, लाइक आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, they move between different components of an ecosystem. And this movement of nutrient between the different components of an ecosystem is referred as nutrient cycling, or we also call it biogeochemical cycle. Okay? We also call it biogeochemical cycle. Third, inorganic nutrient is required by living organism for growth, reproduction, and to perform various essential function. Movement of these inorganic nutrients between different components of an ecosystem is known as nutrient cycling, or biogeochemical cycle, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट at a particular trophic level at a given time is known as standing crop. याद है ये पॉइंट? ऐसा कुछ बताया था, याद है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। amount of inorganic nutrient present in soil at given time is known as standing state, is known as standing state. ठीक है ना। ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं इसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रिजर्वायर, इसका जो स्टोर हाउस है वो क्या है। अगर इसका रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर है, दैट इज रिफर्ड एज गैसियस साइकिल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एंड नाइट्रोजन। एंड इफ reservoir is mineral rock, then it is known as sedimentary cycle, like phosphorus, sulfur, etc. Right on? Nutrient cycle is broadly divided into two different types. On the basis of their reservoir, if reservoir is atmosphere, it is known as
gaseous cycle. It is known as gaseous cycle, like nitrogen, carbon. And if the reservoir is mineral rock, it is known as sedimentary cycle. It is known as sedimentary cycle, like phosphorus, sulfur, etc. Like phosphorus, sulfur, etc. ठीक है, तो ये जो रिजर्वायर है इसका रोल क्या है, जहां पे भी इसका स्टोर हाउस उसका रोल क्या है? तो रिजर्वायर का रोल ये है कि इफ देयर इज एनी इम्बैलेंस बिटवीन इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स, ये कितना आया और कितना बाहर निकला सर्कुलेशन से, अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस होगा, जैसे मान लो कम पड़ गया तो रिजर्वायर दे देगा, ज्यादा होगा तो रिजर्वायर ले लेगा. सो इट्स ओनली फंक्शन इज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स, ताकि कंटिन्यूस साइकिल रन होता रहे. राइट डाउन, only function of reservoir to maintain balance between influx and efflux. Environmental factors such as, next one, environmental factors such as soil moisture, pH, temperature, affects nutrient cycle by regulating release of nutrient in atmosphere, तो नाइट्रोजन साइकिल तो हमने पढ़ा हुआ है 11th में मिनरल न्यूट्रिशन में, याद होगा आपको. तो नेक्स्ट हेडिंग इज कार्बन साइकिल. दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, अगला स्टार्ट भी हो जाएगा. थैंक यू.